In the previous classes, we discussed some points regarding the voltage sources and the current sources. In this class, let us start with the passive elements. In the passive elements, the first one is a resistor. In the passive element, first one is a resistor. Next put side resistor. I hope everything clear. Audio, video, everything clear. Okay. Now correspond to resistor here. Correspond to resistor. Whenever the current is circulating this one, power dissipation equal to I square R. Power dissipation equal to I square R. If you operate this circuit for t seconds, we can find out the energy. Energy equal to I square RT. Here, if you come to the resistor, resistance is a property of the resistor. It always opposes the current. By doing so, it converts the electrical energy to heat energy. To convert the energy from one form to other form, always some opposition is required. Without opposition, no energy conversion takes place. In this example, that opposition created by resistance. Or simply, we can use the statement as a resistance is nothing but a friction to flow of electrons. Here the resistance is nothing but a friction to flow of electrons. If more friction is present, now we can say this as a resistance is very high. Now, what is the flow of electrons in but a current? Right, the first point. Right, one point. Resistance is a property of the resistor. Resistance is a property of the resistor, comma, it opposes the current. By doing so, it converts electrical energy to heat energy. By doing so, it converts electrical energy to heat energy. Okay, now I increase the volume also. Next point. Right, one more point. Resistance is nothing but a friction to flow of electrons. Resistance is nothing but a friction to flow of electrons. Resistance is nothing but a friction to flow of electrons. Just draw this figure. In this example,
L is the length of the conductor, A is the area of cross section conductor. L is the length and A is the area of cross section. If I current is flowing this conductor, with respect to Ohm's law, at constant temperature, current density is directly proportional to electric field intensity. With respect to Ohm's law, the current density is directly proportional to electric field intensity. Now from this proportionality, here I am trying to introduce one constant. That constant is a conductivity. Now we got the relation between current density and the field intensity. But in our network theory, every time we focus on the voltage and the current. Let us rewrite this expression in terms of voltage and the current. Now current density can write in terms of current. What do you write this one? I by A. What about unit for this one is the ampere per meter square. Now can you write this conductivity in terms of resistivity? What do you write this one? 1 by rho. What about unit for this one is the mho per meter. Can write the field intensity in terms of voltage? What do you write this one? The field intensity equal V by L. Now what about unit for this one is the volts per meter. What is the basic formula? For resistance is we can write this as R equal to rho L by A. The basic formula is R equal to rho L by A. Now with help of these relations, can you substitute all these relations in our expression? In this example, current density is replaced by, we can write the I by A. Now conductivity equal to, we can write this as the reciprocal of resistivity. Now this field intensity we can write in terms of voltage. Then if you rearrange this equation, we can write this with a V by I equal to rho L by A. If you rearrange this equation, we can write this. देखिए इधर बेसिक फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल रो एल बाई ए. बेसिक फॉर्मूला क्या है इधर रो एल बाई ए. That means sir, what is the rho L by indicate the resistance. Now from this example, we can conclude as a given conductor के लिए हमेशा length constant, area of cross section constant, और क्या is the resistivity. Resistivity is also constant. इधर ऐसा बोल सकते हैं, if all the terms are the constant, indirectly we can say V by I ratio also constant. If all the terms are constant, indirectly we can say this V by I ratio also constant. V by ratio also constant. Okay, write one point. Ohm's law states that, Ohm's law states that, okay, write the first point. First point goes there. Ohm's law, write the first point. Ohm's law states that at constant temperature, current density of the conductor is directly proportional to electric field intensity. Current density of the conductor is directly proportional to electric field intensity. Okay, I hope all of you copied this one. देखिए इधर from this example finally conclusion क्या है इधर V by I ratio indicate the resistance. This V by ratio indicate the resistance.
That means sir, correspond resistance, we got one relation is V equal to I into R, V equal to I into R. The same expression we can write in terms of conductance also. Here the reciprocal of resistance is the conductance. The same thing we can write the corresponding conductance also. Reciprocal of resistance is the conductance. Or we can write one more relation. In this example, I replaced by its equivalent value dq by dt. dq by dt. In this example, all these relations indicate the Ohm's law. According to our requirement, we use the respective mathematical equations. Now here itself, I am writing the Ohm's law expression corresponding inductor also. Ohm's law expression corresponding inductor. देखिए इधर इंडक्टर के लिए व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन क्या है जी V इक्वल टू L dA by dt. V equal to L dA by dt. Again about this formula we discuss very clearly in the further steps when we discuss about inductor. Here I am introducing all the formulas with respect to Ohm's law. Now this is the Ohm's law relation corresponding to inductor. This Ohm's law relation corresponding to inductor. And if you rearrange this equation, we can write this as a 1 by L integral of V dt. These two are the Ohm's law expression corresponding to inductor. Ohm's law correspond to the inductor. Same thing we can repeat for capacitor also. Now capacitor के लिए current equation क्या है जी I equal to C dV by dt. This I equal to C dV by dt. About this inductor capacitor formulas we discuss very clearly in the further steps. Just I am introducing all the Ohm's law expressions. If you rearrange this equation, we can write this as this V equal to 1 by C integral of I dt. 1 by C integral of I dt. Now these are the Ohm's law expression correspond to resistor and correspond to inductor and correspond to capacitor. That is one. Okay. Observe the one more point. Generally, you will get one doubt. What is the Ohm's law statement? I directly proportional V or V directly proportional I? Which one is the correct statement? In the interviews also ask the question. What is the Ohm's law correct statement? I directly proportional V or V directly proportional I? Give the reply. Which one is the correct? I directly proportional V or V directly proportional I? कौन सा सही है जी? चलिए चेक करेंगे. In this example here, both are the correct statements. Here, remember as a, if you are writing I directly proportional V, meaning of V is nothing but EMF. Meaning of E nothing but EMF. And the meaning of V is nothing but here. It is a potential difference. Or we can also name as a voltage drop. We can also name this as a voltage drop. Here both are the valid statements. But out of these two, which one the first statement? No, this is our actual statement. I directly proportional Vs is the actual statement. No, this is our the second statement. क्यों बोलते हो? Because of source voltage we got the current.
and we got the, with respect to current we got the potential difference, with respect to current we got the potential difference. And one more thing, in the questions they ask, then what is the difference between the potential difference in the EMF? Either EMF ka unit volts, potential difference also volts. Then what is the main difference between EMF and potential difference? If you observe these 2 points here, remember as a, out of these two, which one is the cause and which one is the effect? Which one is the cause, which one is the effect? Here always this EMF is a cause. Here remember as a, always this EMF is a cause. And the potential difference, here the potential difference is the effect. EMF is the cause and potential difference is the effect. Come to the one more point. Now in this example, shall I select this here? This EMF is independent on the current and the resistance magnitude. In this example, this EMF is independent on the current and the resistance magnitude. But if you observe here, potential difference depends on the current and the resistance magnitude. The potential difference depends on the current and the resistance magnitude. Just draw this figure, write one point. एक point लिख लो इधर. Kushwa, at the end remind me, at the end I will show that previous slide. एक पॉइंट लिखो इधर. EMF is independent on the EMF is independent on the current and resistance magnitude. Current and resistance magnitude. But the potential difference depends on the current and resistance magnitude. Potential difference depends on the current and resistance magnitude. Okay. देखिए इधर, in this example, first can you conclude this first figure and second figure, both are the same or different? Meaning of S is starting end, F is finishing end. Both figures are same or different? Suppose if this is a resistor, every element is in the two ends.
Suppose if I take this as starting end, other one is a finishing end. If you observe here, according to connections, the first figure, second figure, both are the different. Either reason क्या है बोले तो in this example, the starting end is connected to positive terminal of the source. In this example, the starting end is connected to positive terminal of the source. But here, if you come to this one, the starting end is connected to negative terminal of the source. Starting end connected to negative terminals of the source. That means according to physical connections, first figure and second figure both are the different. अब characteristics check करेंगे. In this example, let us draw the VI characteristics. Here the remember as a meaning of V is nothing but a potential difference. Meaning of V is a potential difference. It is not source voltage. देखिए in this example, if you increase the source voltage by 10%, what will happen? Current also increase by exactly 10%. If current increase by 10%, potential difference also increase by 10%. Similarly, if current increase by 50%, potential difference also increase by exactly 50%. If current increase by 90%, potential difference also increase by exactly 90%. Then if you plot the graph, what the shape of the graph is exactly linear. Now for this one, slope is a constant. Now same thing, let us go for the second figure. In this example, देखिए current कैसे circulate हो रहा है जी? Correct clockwise direction. Clockwise direction बोलते हो I indicated along the positive x-axis. इधर current कैसे what is the polarity इसका is plus minus. The plus minus बोलते हो I indicate along the positive y-axis. When compared to this one, relatively let us go for the second figure. Here current कैसे जा रहा है जी? Clockwise direction. Clockwise direction मतलब positive x-axis. मगर इधर करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन means I indicate along the negative x-axis. मगर इधर ऑलरेडी पोलैरिटी क्या है? प्लस माइनस. इधर कैसा है रे? माइनस प्लस बोलते हो नेगेटिव y axis. When compared to this one, in the second figure is opposite. करंट डायरेक्शन कैसे जा रहा है? इधर क्लॉकवाइज, मगर इधर कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट किधर लिया? इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस. वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव वाई एक्सिस. इधर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. देखिए इधर इफ करंट इंक्रीज बाय 10%, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीज बाय एक्जैक्टली 10%. इफ करंट इंक्रीज बाय 50%, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीज बाय एक्जैक्टली 50%. इधर भी आप ग्राफ डेवलप करें तो again what is the shape of the graph is exactly linear. Shape of the graph is linear. That means in this example, element properties corresponds example. This element properties and characteristics are the independent on the direction of current. देखिए it may be clockwise direction or the anti-clockwise direction. Always identical characteristics are the present. Whenever the element properties and characteristics are independent on direction of current, then it is named as this bidirectional element. Then it is named as a bidirectional element. Or in the questions, they may use one more word, bilateral. Here remember as this bidirectional, bilateral, both words are the same. Bidirectional, bilateral, both words are the same. Next point. Here kaise hai, slope is a constant. Slope constant is element obeys the Ohm's law. When element obeys the Ohm's law, we can call this as a linear resistor. Here remember as every linear element should obey the bidirectional property. Every linear element should obey the bidirectional property, but not vice versa. देखिए इधर. Now again, to understand this figure very clearly, you can take the one more example. Let us take the one more example. Now can you give the answer? The current magnitude in the figure 1 and figure 2.
the current magnitude in the figure 1 and figure 2, both are equal or unequal current magnitude. Current magnitude in both figures same or different? Check करेंगे. देखो इधर. Now in this example, what about diode is a forward bias. Forward bias वाला resistance कितना है जी? बहुत कम. मगर इधर देखिए. What about this diode is a reverse bias or forward bias? Reverse bias. A direction में क्या हो रहा है जी? Low resistance forward bias. A direction में क्या हो रहा है जी? High resistance reverse bias. That means in this example, element properties are depends on the direction of current. There हमेशा element properties are depends on the direction of current. When it depends on the direction of current, then it is known as a unidirectional element. Unidirectional element. Now for that one of the best example is a diode. For that one of the best example is a diode. But if you come to this example, इधर देखिए, it may be clockwise direction or anti-clockwise direction. Here the resistance magnitude remains same. Resistance magnitude remains same. The resistance change नहीं हो रहा है. Here element properties characteristics are independent on direction of current. Independent बोलते we can use word as a bidirectional element. I hope all of you getting ना. देखिए current direction कैसे जा रहा है? Clockwise direction positive x axis, anti-clockwise direction negative x axis. Voltage polarity क्या है? Plus minus positive y axis. मगर इधर कैसा है? Minus plus. When compared to opposite negative y axis. Okay. First draw this graph. I'll conclude some points. Write some points. When element properties and characteristics independent on the direction of current, independent on the direction of current, independent on the direction of current, then it is known as bidirectional element. Then it is known as bidirectional element. In the brackets, right? Bilateral. The brackets, right? Bilateral. Next point. When element obeys the Ohm's law, then it is known as linear resistor. Then it is known as linear resistor. Next point. Every linear element should obey the bidirectional property. But not vice versa. Right, next point. इधर देखिए, we already concluded this example. मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल अनइक्वल? अनइक्वल. क्यों बोलते हो? इन दिस एग्जांपल क्या आते हैं इधर? फॉरवर्ड बायस. अगर एग्जांपल कैसा आते हैं इधर? रिवर्स बायस. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल अनइक्वल? अनइक्वल.
write one point. When element properties and characteristics, when element properties and characteristics when element properties and characteristics depends on the direction of current, then it is known as unidirectional element. Then it is known as unidirectional element. Example, diode. Example, diode. ये फिगर कॉपी कर लो जी. Okay. Okay. Come to some examples. In the questions, what they do here? In the question, simply they give VI characteristics. They ask you to conclude whether it is linear or the non-linear, whether it is unidirectional or the bidirectional, whether it is active or the passive. For that one, let us see some different examples. Come to the first example. देखिए, in this particular example, देखिए, up to certain portion linear, then after constant. Then what about the combined characteristics are the non-linear? Come to the second point. Is it unidirectional, bidirectional? When element obeys a bidirectional property, characteristics should be identical in the opposite coordinates. When element obeys a bidirectional property, characteristics should be identical in the opposite coordinates. देखिए, these two are the identical, not identical. Not identical means we can use word as a unidirectional. Now can you conclude, is it active or passive? Check करेंगे. Now corresponds this example, if you verify this V by I ratio, check करो जी, here the voltage positive, current also positive. For this particular example, voltage positive, current positive. If voltage positive, current positive, then what a ratio of this one also positive. Ratio of this one is a positive. On the other hand, come to other coordinates. Come to other side. इधर देखो जी, in other side what is the voltage negative, current भी कैसे है negative. If voltage negative, current negative, again what ratio of this one is a positive. That means if V by I ratio is positive in the both quadrants, then the element is a passive. What is the reason for this one? If you observe the passive elements, always the passive elements are the greater than 0. No negative inductance, no negative capacitance are the present. That's why here the passive elements means always it should be greater than 0. Greater than 0 means it should be always positive. But if you come to this active elements, negative voltage present, positive voltage also present. Can apply same logic for second figure also. आप ट्राई करो जी, second figure आप ट्राई करो.
Let us, can you apply same logics for second figure also? Boloji again, is it linear, non-linear? Non-linear. Up to certain portion linear constant. That means what the result is a non-linear. What about this one? Unidirectional, bidirectional? Bidirectional. Here the characteristics are identical. Characteristics are identical in the both quadrants. Characteristics are identical in the both quadrants. Then what is the appropriate word for this one is a bidirectional. Come to third one. Third one is it active or passive? In this example, if you observe here, V by ratio positive. Here also that V by ratio is a positive. If V by ratio positive in the both quadrants, if V by ratio positive in the both quadrants, then the element is a passive. Then element of this one is a passive. If V by ratio positive in the both quadrants, then the element is a passive. Okay, all of you got same answers? Very good, very good, very good. Many students gave reply. Very good, very good, very good, very good. Very good, I appreciate, very good. Come to one more example. अब बोलो जी example के लिए बोलिए. Now give the answers for this example. Give the answers for this example. Is it linear, non-linear? Again, it is also non-linear. Non-linear. Now it is unidirectional, bidirectional. In this example, up to certain portion linear, constant. Up to portion linear, constant. What are the combined characteristics are the non-linear. Combined characteristics are the non-linear. Again come to unidirectional, bidirectional. What are the ध्यान से देखना इधर. देखो जी, current is increasing up to what value? 3 amperes. Voltage कितना इधर? 20 volts. मगर इधर current increasing up to what value only? -2 amperes. It is going only up to -6. मगर देखो जी, characteristics of these two are the identical, not identical, not identical. मगर पिछले एग्जाम्पल देखिए जी, प्रीवियस एग्जाम्पल देखिए, इधर कुछ भी डेटा मेंशन नहीं किया आपको, ओनली द शेप ऑफ द ग्राफ इज गिवन. कुछ भी डेटा मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वी गो एज ए दीस टू आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दीस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. मगर इन दिस एग्जाम्पल इधर क्वेश्चन में दे दिया डेटा आपको. दैट्स व्हाई हियर इज इट यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल. Unidirectional. Now, is it active or passive? For this example, arbitrarily take the any voltage and any current. Then what is the V by I ratio? This one is a positive. V by ratio positive. Here we देखिए, arbitrarily take the any voltage and current. Again here also, what is V by ratio is a positive. Passive. Now observe here. Give the answers for this example. Give the answers for this example. Is it linear, non-linear? Linear. Is it unidirectional, bidirectional? In this example, characteristics are identical. Characteristics are identical in the both quadrants. Bidirectional. Is it active or passive? चलो check करेंगे. For this example, arbitrarily take the any voltage and any current. What is the sign of the voltage is a positive. What is the sign of the current is a negative. Here also arbitrarily take the any voltage and any current. Voltage negative, then what the current is a positive. Then for this particular example, can I select this V by I ratio?
For this example, whatever this V by ratio is a negative. If V by ratio is negative, either in the both quadrants, V by ratio negative, either in the both quadrants or in the one of the quadrant, then the element is active. Then the element is active. Then the element is active. Okay. Active linear. Okay, very good, very good. Many students give the reply. Very good, very good, very good. Very good, very good. Come to the other examples. पहले example बोलिए. Now corresponds example. What about this one? Is it linear or non-linear? Which one here? Non-linear. Now is it unidirectional, bidirectional? Whenever the element obeys a bidirectional property, characteristics are identical in the opposite quadrants. Characteristics are identical in the opposite quadrants. But here they are identical in the adjacent quadrants. That means here unidirectional. Now is it active or passive? Now in this example, arbitrarily take the any voltage and any current. Now for this example here, this V by A ratio. For particular example, whatever the current is negative, whatever the voltage is a positive. Current negative, voltage is positive, then what a ratio? This one is a negative. Ratio is a negative. That means if V by ratio is negative, either in the only in one of the quadrant or in the both quadrants. V by ratio is negative either in the only one of the quadrant or in the both quadrants. Then the element is a active. Then the element is active. Come to the last example. Last example बोलिए आंसर्स क्या है जी? इधर भी पहले एक्टिव से स्टार्ट करेंगे. This V by ratio corresponds example whatever this V by ratio is a negative. देखिए corresponds example this V by ratio is a negative. When this V by ratio negative, then which element here? Active element. Which element is an active element? Come to next one. Is it unidirectional, bidirectional? Unidirectional. When the element obeys the bidirectional property, characteristics are identical in the opposite quadrants. मगर इधर देखिए, these two are identical in the adjacent quadrants. Come to next one. Now, is it linear, non-linear? Here, remember as every linear element should obey the bidirectional property. Every linear element should obey the bidirectional property, but not vice versa. मगर देखिए, it is unidirectional. Unidirectional means indirectly you can say it is not common to the linear. क्यों बोलते हो? Every linear element should obey the bidirectional property. मगर देखिए, it is not obeying the bidirectional property. Then what is the statement for this one? Non-linear. Okay, last one थोड़ा ध्यान से कंक्लूड करना है. Generally many of them get confusions. ये शेप देखने से immediately they go for linear. मगर और एक कंडीशन क्या है linear के लिए? Every linear element should obey the bidirectional property. मगर ये satisfy नहीं हो रहा इधर. आप unidirectional बोले तो it is not common to the linear. Okay, you have to pay little more attention for last one.
Now write some points. Write the note. एक note लिखो इधर. Write the note. First point. If V by I ratio is positive, if V by I ratio is positive in the both quadrants, if V by I ratio is positive in the both quadrants, then the element is passive. Then the element is passive. Second point. If V by ratio is negative, either in both quadrants, if V by ratio is negative either in both quadrants, or in one of the quadrant, then the element is active. Next point. Above two statements are valid. When the characteristic is passing through origin. Next point. Every linear element should obey the bidirectional property. But not vice versa. Next point. When element obeys the bidirectional property, characteristics should be identical. In the opposite quadrants. But not in the adjacent quadrants. Okay.
Now let us see this open circuit and short circuit. Open circuit and short circuit. Here the necessary condition. In this example, the necessary condition for the circulation current is a closed path. Necessary condition for the circulation current is a closed path. Now for this example, if you remove the resistance, for this example, if you remove the resistance, it is open circuited. Open circuited. If it is open circuited, then what is the respect to current of this one equal to 0? Then what is the open circuit current is equal to 0. Open circuit current equal to 0. Now open circuited, what is the relation between the current and resistance? Is the inverse relation. Relation between current and resistance is inverse relation. It is open circuited, then what is respect to open circuit resistance equal to infinite. Open circuit resistance equal to infinite. Now let us find out the open circuit voltage. In this example, if you open circuit this one, what do you get is say open circuit voltage is equal to Vs. For this example, what is the open circuit voltage equal to Vs? Magar you will get one doubt here. Now with respect to Ohm's law, we'll get doubt as a this V equal to formula क्या है I into R. With respect to Ohm's law, relation क्या है V equal to I into R. देखिए इधर for this example, current कितना है इधर 0. Current 0, resistance कितना है इधर infinite. Current 0, resistance infinite. Now बोलिए what is the value of this one? Current कितना है 0, resistance infinite. First, if you apply your mathematics, with respect to mathematics, sir, 0 into infinite, this value cannot be defined. With respect to mathematics, sir, 0 into infinite, this value cannot be defined. This value cannot be defined. Again, if you come to our subject, we can give statement as a our Ohm's law statement cannot be applied for open circuit. With respect to our subject, we can give statement as a Ohm's law cannot be applied for open circuit. To apply the Ohm's law, always network should consist of the finite value of the resistance. Network should consist of the finite value of the resistance. That's why here we can give statement as a our Ohm's law statement cannot be applied. Our Ohm's law statement cannot be applied for the open circuit. Cannot be applied for open circuit. Chaliye. Let us see one example for short circuit. Now if you take any network here, let us take the two branches. Let us take like this. Now for this example, due to any reason, let us assume this branch is a short circuited. Due to any reason, this branch is a short circuited. Whenever it is short circuited, can you conclude here what is the respect to resistance equal to how much? 0. Corresponds example, whenever it is short circuited, what is respect to resistance equal to 0. Resistance equal to 0. That means sir, correspond short circuit resistance कितना है 0. Resistance 0. There ऐसा बोल सकते हैं ना? Now for this example, resistance 0 means what the voltage across element is also 0. Resistance 0 means voltage across element is also 0. देखिए इधर. For this example, if you calculate the current, shall I select this here? This entire source current is goes to short circuit. इधर क्या होता है जी? This entire source current go to short circuit. Now if you find out the short circuit current in this example कैसे लिख सकते हैं आप? Vs by Rs. Vs by Rs. For this example, this entire current bypass to the short circuit. देखिए here how do you relationize I equal V by R. In this example देखो इधर voltage कितना है इधर 0, resistance also 0. Here voltage 0, resistance also 0. Again, can you go for mathematics? With respect to mathematics, sir, 0 by 0, this value can be defined, cannot be defined. Again, with respect to our subject also, we can say this as a our Ohm's law statement cannot be applied for short circuit also. हमेशा Ohm's law apply करने के लिए network should consist some finite value resistance. Its meaning is our Ohm's law statements applicable only for the practical networks. This exactly R equal 0, R equal infinite कब होता है? Only in the ideal system. Practical system, every conductor have the some finite value resistance. Whenever the finite value resistance is there, then only our Ohm's law can be applied. Otherwise, it cannot be applied. Table copy कर लो जी, write one note. At the end, write one note. Write the note. Ohm's law cannot be applied
Ohm's law cannot be applied. Still some disturbance. किधर से आ रहा है disturbance? Ohm's law cannot be applied for open circuit and short circuit. Ohm's law cannot be applied for open circuit and short circuit. Okay. Dear students, so far we discussed some basic point correspond resistor. Now other passive elements are the inductor and capacitor. About that inductor and capacitor, I will discuss very clearly in the transient chapter. So that entire transient chapter depends only on the basics of the inductor and capacitor. That's why about these two elements I will discuss in the transient chapter. Next, let us see some questions. A question likho ji. Write the first question. Find equivalent inductance. Find equivalent inductance. Find equivalent inductance with respect to A and B. Find equivalent inductance with respect to A and B. प्रशांत, आपका डाउट क्या है जी? To identify equivalent value, for any combination network, first identify the respect to series connection, the parallel connections. Every element is on the two ends, starting end and the finishing end. Every element is on the two ends, starting end and the finishing end. Finishing end of the first element is connected to starting end of the second element. Finishing end of the first one connected to starting end of the second element. That means, sir, for this particular example, only one joint is present. For this particular example, only one joint is present. And in the series circuit, the current of all elements are the same. The current of all elements are same. Whenever these two are satisfying, we can conclude as a elements are connected in series.
elements are connected in the series. And here to understand easy way for this one, we can take simple example. Let us assume this is one resistor, it is also one resistor. Every resistor has the two ends, starting and finishing ends, starting and finishing. Okay, if you join together, only how many joints are there? One joint. One joint. As well as if these two are connected together, the current in this element, current in this element, both should be same. The current of the both elements are the same. If these two conditions are satisfying, we can say elements are connected in series. Come to second example. Second example, let us take this is one resistor, this is another resistor. Okay, I am trying to join these together at this point as well at this point. Every element has the two ends. Let us say this is starting and this is also starting. These two are connected together. One joint is present here. Other end also connected together. This other joint is also present. That means इधर देखिए कितना joints है जी? Joint 1 and the joint 2. Two joints. And in the parallel circuit, voltage across all the branches are same. In the parallel circuit, इधर क्या है जी? Voltage across all the branches should be same. In this parallel circuit, voltage across all the branches should be same. Whenever these two are satisfying, we can conclude as a elements are connected in the parallel. Whenever these two are satisfying, we can say elements are connected in the parallel. Elements are connected in the parallel. Now, with help of this one, let us verify the series and parallel connections. With help of that one, let us verify the series and parallel connections. पहले एक कॉपी कर लो जी. This series connection, parallel connection is a very important point. क्यों बोल तो in many questions we use the series and parallel connections only. Yes. कौन है नो? Aishwarya, yes, your statement correct. ओके अब चेक करेंगे कनेक्शंस. अब कनेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ फॉर दिस एग्जांपल पहले तो देखो फॉर दीज टू इंडक्टर्स वन जॉइंट इज कनेक्टेड हियर. वन जॉइंट कनेक्टेड हियर. व्हाट एवर दिस अदर जॉइंट इज कनेक्टेड हियर. देखिए एक बार इधर कनेक्ट हुआ, वन मोर जॉइंट कनेक्टेड हियर. दैट मींस कैन आई से दिस सर दीज टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल. One joint is connected here, other joint is connected here. That means these two are connected in the parallel. Two joints are there. Similarly, for these two inductors, one joint is connected here. This other joint is connected here. Other joint connected here. Here we देखिए again how these two inductors are connected parallel. One joint connected, other joint connected. Then can I select this here for this particular example? देखो these three inductors are connected in parallel. देखिए these two are in the parallel, again these two also in the parallel. Can you apply same logic? In the other side also? Check करो जी. Again these two are in the parallel, whatever these two also in the parallel. That means we can conclude as these three inductors are connected in the parallel. These three inductors are in parallel. Can you redraw the given figure? Can you redraw this given figure? Now correspond this example. देखो जी these three inductors connected in the parallel. I brought this point A to the upwards. Either be same logic. These three inductors are in the parallel. I brought this point B to the upwards. अब देखो जी
these three indents are in the parallel, equal to कितना इधर L by 3. These three indents in the parallel, equal to कितना इधर L by 3. Can you draw the simplified figure for this one? Check करो जी, can I draw this? Three indents are in the parallel L by 3. ये भी देखिए, three indents are in the parallel L by 3. मगर इधर कितना है this one L, but this is also L. Can you simplify further? Check करो जी, can you simplify further? In this example L by 3 L by 3. For this example here L by 3 L. How these three indents are connected? Series. देखिए, only one joint is connected. Here also only one joint is connected. How the three indents are connected? The series. For this example, these three indents are connected series. We can reduce L by 3 L by 3. If you simplify this one, we can reduce 5L by 3. We can reduce 5L by 3. Now for this 5L by 3 and L, one joint is connected here, one joint connected. What about this other joint is connected here? For this particular example, one joint is connected here, this other joint is connected here. Then here in this example, how this 5L by 3 and L, how the 5L by L both are connected in the parallel. If two indents are in the parallel, then what is simplified formula for this one? ऐसे लिख सकते हैं ना, L equivalent equal to L1 L2 by L1 plus L2. चेक करो जी, सिंप्लीफाई करने से कैन फाइंड L equivalent, कैन फाइंड L equivalent. Very good, very good, very good. Many students get the answer. Oh, somebody got 2L by 5. चेक करो जी, सीमा जी और एक बार चेक करो. Don't worry, Kushi Sharma will take some more examples. Very good, very good, very good. Many students are giving reply. Answer कितना है जी? 5L by 8. 5L by 8. Okay, very good. Come to one more example. That is question. Find I naught. Find I naught of the network shown. Find I naught of the network shown. Find I naught of the network shown. Somebody requesting previous diagram. Copy कर लो जी.
ओके, चेक करेंगे. Now again here also logic is same. पहले क्या करो, try to identify connections. First try to identify the connections. इधर देखो जी, let us take the potential at this point is A. Potential at this one is also A. Potential at this one is A. Potential at this one also A. Potential at this point also A. Potential at this point also A. Potential at this point also A. Let us assume potential at this point is a B. Potential at this point is a B. Now let us identify the connections. हाँ, इधर देखो जी. For the 6 ohms and current source, 6 ohms and current source, देखिए one joint is connected here, other joint is connected here. देखिए एग्जाम्पल में 6 ohms and 3 amperes के लिए वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. कितना जॉइंट्स है इधर? 2 जॉइंट्स. 2 जॉइंट्स बोलते कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन. फिर भी देखिए 6 and 2, 6 and 2 के लिए वन जॉइंट इज कनेक्टेड है, अदर जॉइंट इज कनेक्टेड है. फिर भी क्या है जी? 6 and 2 के लिए वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. कितना जॉइंट्स है इधर? 2 जॉइंट्स. 2 जॉइंट्स बोलते कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन. ये भी देखिए, इधर भी देखिए 2 and 7. 2 and 7 के लिए वन जॉइंट इज कनेक्टेड और एक जॉइंट इधर कनेक्ट हुआ. इधर क्या है? इधर वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. कितना जॉइंट्स है जी? 2 जॉइंट्स. 2 जॉइंट्स बोलते कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन. अगेन द 7 and 3. 7 and 3 के लिए वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. देन हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर? 2 जॉइंट्स. 2 जॉइंट्स मींस कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन. ओके, दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड एज ए, इधर ध्यान से देखे तो एलिमेंट्स कैसे है जी? ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. If all the elements are in the parallel, can you redraw this simplified figure? Can you redraw this simplified figure? In this example, 7 amperes current is going from B to A. Current is going from B to A, but current direction for this one upwards. Okay, verify current directions. Either 3 amperes भी कैसे जा रहे? B to A. Now lower one I had to guess B, upper one is the A. Here भी current कैसे जा रहे जी? 7 amperes is going from B to A. B to A. That means given figure we can read out like this. Given figure we can read out like this. अब simplify करेंगे. इधर देखो जी, दिस 3 amperes and 7 amperes. 3 amperes, 7 amperes दोनों कैसे है जी? पैरेलल. Parallel and both are in the same direction. Parallel and both are in the same direction. Now again if you come to this 6 ohms and 3 ohms. 6 ohms and 3 ohms दोनों चेक करो जी, दोनों कैसे इधर भी? पैरेलल. Then what is the equivalent distance है? 2. देखिए 2 ohms में करंट कैसे जा रहे? It is going from B to A. करंट कैसे जा रहे जी? It is going from B to A. Can you develop a simplified figure for this one? देखो जी 3 and 7 both are in the parallel. Parallel बोल तो equivalent current कितना है जी? 10 amperes. Same direction addition. देखिए 6 and 3 both are in the parallel. Parallel बोल तो equivalent distance कितना है इधर? 2 ohms. Equivalent distance is 2 ohms. What about this other one? One more other resistance is 2 ohms. Here the current is going from B to A. Current going from B to A. देखिए इधर in this example 10 amperes current is coming here. 10 amperes current is coming here. दोनों का resistance value सेम है, अलग अलग है? Same resistance. That means the total current is equally distributed in branch 1 and branch 2.
टोटल करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्रांच 1 एंड द ब्रांच 2. मगर इधर देखो जी I नॉट डायरेक्शन कैसा है इधर अपवर्ड्स, मगर 3 एम्पियर डायरेक्शन कैसा है इधर डाउनवर्ड्स. इधर I नॉट एंड 5 एम्पियर्स दो बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट बोलते क्या लिख सकते हैं इधर I नॉट इक्वल -5. इधर क्या लिख सकते हैं जी I नॉट इक्वल -5 एम्पियर्स. I not equal -5. Okay, very good. Many students give the reply. Very good, very good, very good. But some students give the other answers. No problem. Anyhow, you tried. I appreciate your efforts. At the next one, find equivalent capacitance. Find equivalent capacitance. Equivalent capacitance with respect to A and B. Find equivalent capacitance with respect to A and B. Equivalent capacitance with respect to A and B. In this example, again let us identify connections. Now if you come to 8 farad, 6 farad, 8 farad, 6 farad, check karo ji. One joint is connected here. Let us assume this one is a K. First let us give the names. Potential at this point is a K. Whatever the potential at this point is also K. No, potential at this point is a K. What the potential at this point also K. अब चेक करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे. हाँ, इधर देखो जी 8 farad, 6 farad, 8 farad, 6 farad. कितना joints है इधर? One joint is connected here. One joint connected here. This 8 farad connected to the K. But 6 farad also connected to the K. In this example, 8 farad connected to the K and 6 farad also connected to K. कितना joints है इधर? 2 joints. 2 joints बोल तो कौन सा connection? Parallel connection. इधर भी देखिए 4 and 10. 4 and 10 के लिए कितना joints इधर? Only one joint. इधर के वन मोर जॉइंट इज कनेक्टेड हियर, वन मोर जॉइंट कनेक्टेड. कितना जॉइंट्स है टोटल? 2 जॉइंट्स. देखिए वन जॉइंट इज कनेक्टेड हियर, अदर जॉइंट कनेक्टेड हियर. दैट मींस हाउ दिस 4 and 10 बोथ आर इन द पैरेलल. 4 and 10 बोथ आर इन द पैरेलल. ये भी देखिए 6 and 8, एक वन जॉइंट इज कनेक्टेड, अदर जॉइंट इज कनेक्टेड. ये दोनों भी कैसा है जी? अगेन दीस टू आल्सो कनेक्टेड द पैरेलल, दीस टू आल्सो कनेक्टेड द पैरेलल. इन द सेम फिगर कैन यू रीड लाइक दिस? Same figure, can you like this here? What is the 10 farad? Okay, the given figure we can draw like this. अब check करो जी how this 8 and 6 both are connected parallel. Parallel कितना है इधर? 14. This 10 and 4 both are in the parallel. Again, what is the equivalent value for this one is if two capacitors are parallel, equivalent value क्या है? C1 plus C2. Equivalent value क्या है इधर? C1 plus C2. Can you draw a simplified figure?
Now 8 and 6 both are in the parallel. Equivalent value कितना है इधर 14. It is also how much 14. Now let us simplify further. In this example 14 both capacitors are in series. Only one giant is connected. If only one giant is connected, what is our requirement is the equivalent capacitance with respect to A and B. A and B देखे तो कितना है इधर 10 farad. Whatever is 14 both are in series. Series बोलते equivalent value कितना है इधर 7 farad. Now finally what is C equivalent? अब इधर सिंप्लीफाई करें तो पूरा सिंप्लीफाई करें तो C equivalent क्या है जी फाइनली? C equivalent is C1 plus C2. C equivalent is C1 plus C2. 10 plus 7. 17 farad. Very good. Okay. Oh, somebody got 38. एक बार चेक करो जी, कैलकुलेशन चेक करो जी, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में आपका. Very good dear students, very good. Okay. Next one. Question लिखो जी इधर. Find I naught of the network shown. Find I naught of the network shown. Very good dear students. Very good. Vikas Kumar, don't worry. Two giants are there. Kushi Sharma जी इधर देखिए 7 and 10 के लिए वन जाइंट इज कनेक्टेड. एक बार इधर कनेक्ट हुआ ना, देखिए एक बार इधर कनेक्ट हुआ और एक बार इधर कनेक्ट हुआ. कितना जाइंट्स है जी? 2 जाइंट्स. 7 and 10 एक बार इधर कनेक्ट हुआ, एक बार इधर कनेक्ट हुआ. 2 जाइंट्स है. 2 जाइंट्स बोलते कैसे बोल सकते हैं? दोनों कैपेसिटर कैसे इधर पैरेलल. दोनों कैपेसिटर कैसे है जी? पैरेलल. C equivalent equal to C1 plus C2. C equivalent equal to C1 plus C2. ओके चलिए अब सिंप्लीफाई करेंगे. फॉर दिस एग्जांपल पहले कनेक्शन चेक करेंगे. Let us assume potential at this point. Potential at this point is a A. Then what about this one? Potential at this point is a B. Potential at this point is a B. देखिए potential at this point is B, but the potential at this point is also B. Here be same thing. Potential at this point B, what is the potential at this point is also B. देखिए इधर भी same thing. Potential at this point is B, what is the potential at this point is also B.
देखो इधर भी सेम लॉजिक, potential at this point is V, potential at this point is also B. Now in this example देखो जी between A to B, in this example A to B कैसे दिखा रहा है इधर, शॉर्ट सर्क्यूट, A to B कैसे दिखा रहा है, शॉर्ट सर्क्यूट, शॉर्ट सर्क्यूट रेजिस्टेंस कितना है इधर, 0, शॉर्ट सर्क्यूट रेजिस्टेंस इक्वल टू 0. Now for this particular example, देखो जी पहले देखो 6 and 9 in the parallel. देखो जी one joint is connected here, other joint is connected here, दोनों पैरेलल में ना. How the 10 and 9 one joint connected, other joint connected, ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल. ये भी देखिए 0 and 10 one joint connected, इधर भी one more joint connected, पैरेलल. ऐसे बोल सकते हैं ना 6 9 10 0. How the 4 branches are connected, पैरेलल. इधर कैसे दिखा लीजिए 6 9 and 10, 6 9 10. What about the other one is a 0. If all the 4 branches are in the parallel, then what is the equivalent resistance equal कितना होता है जी, 0. ये चारों ब्रांचेस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है इधर, 0. अब इधर देखिए, नाउ फॉर दिस एग्जांपल देखो इधर 6 and 6 दोनों कैसा है इधर, पैरेलल बोलते व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज 3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3. अब कैन यू ड्रा द सिंपलीफाइड फिगर फॉर दिस वन. देखो जी हियर व्हाट इज द स्टेटमेंट, ये चारों ब्रांचेस है ना, द चारों ब्रांचेस आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्क्यूट, all the 4 branches replaced by short circuit. इधर भी सेम थिंग, देखिए इधर 6 and 6 दोनों कैसे है जी, पैरेलल. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इधर, 3 ohms, ये कितना है इधर, 6 ohms. अब कनेक्शन चेक करेंगे, देखो जी वन जॉइंट इज कनेक्टेड हियर, अदर जॉइंट इज कनेक्टेड हियर. एक बार इधर कनेक्ट हुआ और एक बार इधर कनेक्ट हुआ. इधर ऐसा बोल सकते हैं ना, दिस एंटायर 6 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल टू 6 ohms. देखिए इधर 3 and 3 दोनों कैसा है जी, सीरीज है ना. दिस सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड पैरेलल टू 6 ohms. क्यों बोलते हो, एक बार इधर कनेक्ट हुआ, वन जॉइंट इज कनेक्टेड हियर, अदर जॉइंट कनेक्टेड हियर. नाउ 2 joints are there. Now 6 and 6 both are in the parallel. If 6 both are in the parallel, then what is equivalent resistance equal to, 3. Equivalent resistance कितना है जी, 3 ohms. इधर सिंप्लीफाई करने से I नॉट निकल सकते ना, I नॉट इक्वल टू व्हाट डू डिस्प्ले दैट, 20/3. कैसे लिख सकते हैं, I नॉट इक्वल 20/3. ओके, वेरी गुड. खुशी शर्मा, आई थिंक यू आर फाइंडिंग लिटिल डिफिकल्टी इन द कनेक्शंस. डोंट वरी, धीरे धीरे आ जाएगा आपको, आप टेंशन मत लो. ओके, somebody asked this figure, कॉपी कर लो जी. कॉपी कर लो.
Okay, first try to identify this one. This is very important. इधर क्या है जी 6 9 10 0, ये चारों ब्रांच कैसे है पैरेलल. ये 4 ब्रांच है पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या होता है इधर 0. कभी भी इन द पैरेलल सर्किट में कोई तो भी रेजिस्टेंस 0 हुआ तो दिस इंटायर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0 होना. बोल तो आप ऐसा भी समझ सकते. पहले चेक कर दी ये तीनों ब्रांचेस कैसे इधर पैरेलल ना. इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो R डैश. ये तीनों के लिए मान लो लेडेजम R डैश. ये R डैश एंड 0 कैसे है पैरेलल में ना, ऐसे लिख सकते हैं ना R1 R2 by R1 plus R2, ऐसे लिख सकते हैं ना. देखो जी इधर R वैल्यू क्या होगा इधर 0, इधर R वैल्यू 0 पुट कर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है इधर 0 होना. बोल तो ऐसा भी एनालिसिस कर सकते हैं. तीनों ब्रांचेस के लिए मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द R का वैल्यू कितना इधर 0 पुट कर तो कितना आ रहा है 0. दिस 4 ब्रांचेस, जो 4 ब्रांच है ना रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट. बाद में क्या हुआ, these two connected parallel. Again what is the equivalent resistance? So this one is a equivalent resistance कितना हो रहा है जी 3 ohms. चारों ब्रांचेस रिप्लेस पे क्या कैसे दिखाना इधर शॉर्ट सर्किट. ओके, आइडेंटिफाई कनेक्शंस, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, एवरी टाइम रिमेंबर एज ए, देखिए ए एंड बी पॉइंट कैसे दिखाना बोलते हो. मान लो दिस इज वन रेसिस्टर, सपोज दिस पेन इज वन रेजिस्टर. फर्स्ट पॉइंट एज्यूम्ड एज ए, सेकंड पॉइंट इज बी. ये बीच में कुछ भी नहीं है ना. जितना वोल्टेज इधर है इधर भी सेम पोटेंशियल, जितना वोल्टेज इधर है इधर भी सेम पोटेंशियल. क्यों बोलते बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है ना. इधर भी सेम थिंग, बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है सेम पोटेंशियल, बीच में कुछ भी नहीं है अगेन सेम पोटेंशियल. मगर इट इज ऑलरेडी गिवन हियर ए. इधर और एक पॉइंट, इधर आंसर कंक्लूड करते समय क्या करो आप, जिधर फाइनाइट वेल रेजिस्टेंस रहते हैं उधर से स्टार्ट करो. आप इधर से स्टार्ट हुआ तो तेरे यू मे गेट सम लिटिल कंफ्यूजन्स. जिधर फाइनाइट वेल रेजिस्टेंस है उधर से स्टार्ट करो जी, इधर से स्टार्ट मत करो, यू विल गेट अननेसेसरी कंफ्यूजन्स. इसलिए मैं किधर से स्टार्ट किया, जिधर फाइनाइट वेल रेजिस्टेंस है उधर से स्टार्ट किया. इधर एंडिंग में क्या है, इधर बी, इट ऑलरेडी पॉइंट ए इज देयर. मान लो दिस इज अवर रेजिस्टेंस, इधर ए है बी है, ए एंड बी बीच में क्या है कैसे दिखा रहे, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितना इधर 0. ओके, इंडिकेट द ए बी पॉइंट्स. धीरे धीरे प्रैक्टिस से यू विल गेट सम आइडिया, डोंट वरी. ओके, कौन है सचिन जी? सचिन जी, वी आर नॉट अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी आर फाइंडिंग ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सचिन, वी आर नॉट अप्लाइंग द ओम्स लॉ हियर, वी आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इधर. ओके सचिन, our target is finding equivalent resistance. Okay, चलिए now draw this figure. At the question, find source current. एक क्वेश्चन लिखो इधर, find source current of the network shown. Find source current. Find source current of the network shown. To understand easy way, give the any names. Give the name as some A,
चेक करो जी, जस्ट फोकस ऑन ABCD पॉइंट्स. एक बार ABCD पॉइंट चेक करो जी. द गिवन फिगर वी कैन रीड ऑल दिस. अपना ओरिजिनल फिगर में ABCD पॉइंट्स इंडिकेट करो. ABCD पॉइंट्स इंडिकेट करो. चेक करो जी. इंडिकेट करने से कैन यू ड्रा लाइक दिस, ऐसे ड्रा कर सकते हैं. चेक करो एक बार. Now for this example, to make calculation simple, I am using application the balancer bridge. For the balancer bridge, one condition is the product of opposite arms are the equal. The product of opposite arms are the equal. Z1 product of opposite arms are the equal. The second point of this one is now in this particular example, potential at point B and point D both are exactly equal. In this example, potential at point B, potential at point D both are exactly equal. Potential at point B and point D both are exactly equal. Whenever these two potentials are same, we can say this as a current of this branch. The current of this branch is equal to 0. The current of this branch, the current flowing from B to D, is equal to 0. The current flowing from B to D is equal to 0. That means whenever you are solving the balance of which, every time focus on these 3 points. प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म्स आर द सेम. फिर पूरा डेरिवेशन करने के बाद, डेरिवेशन कुछ भी जरूरत नहीं है इधर, डायरेक्टली आई एम यूजिंग एप्लीकेशन है. अब इधर डेरिवेशन करें तो द पोटेंशियल पॉइंट बी एंड पॉइंट डी बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल. जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो करंट ऑफ दिस ब्रांच, द करंट ऑफ दिस ब्रांच इज इक्वल टू 0. अब सिंप्लीफाई करेंगे. देखो इधर, नो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, वन अप्रोच टू कंक्लूड द आंसर फॉर दिस वन. देखिए इधर 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. आपको पहले केस 1 चेक करेंगे. इन द केस 1 वन अप्रोच सीधा अब करंट से चेक करेंगे. करंट कितना हो रहा है इधर? 0. बोलिए करंट इक्वल 0. करंट इक्वल 0 इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट. ओपन सर्किट. करंट इक्वल 0. द करंट इक्वल 0 इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओपन सर्किट. इधर रेजिस्टेंस कितना है जी? 6. इधर वोल्टेज कितना है? इधर 12. और द वोल्टेज हाउ मच है? 12. इधर देखो जी, हाउ द 6 and 6 बोथ आर कनेक्टेड? सीरीज. इधर भी कैसा है जी? हाउ द 6 and 6 बोथ आर कनेक्टेड द सीरीज. इधर टोटल रेजिस्टेंस कितना है जी? 12. How the 12 both are connected? Parallel. 12 both are in the parallel. 12 both are in the parallel. Then what is the equivalent resistance equal to? आप इधर सिंप्लीफाई करें तो equivalent resistance देखो इधर कितना है? 12 both are in the parallel. Then what is the equivalent resistance equal to? 6. IS निकाल सकते हैं ना? IS equal 12 by R equivalent. कितना है जी? 2 amperes. सोर्स करंट कितना है इधर? 2 amperes. कौन है नो? आकाश जैन. इफ यू वांट यू कैन डू द डेरिवेशन आल्सो. आकाश जैन, बैलेंस ब्रिज के लिए यू डू वन थिंग. आकाश जैन, यू ट्राई टू फाइंड आउट द नोड वोल्टेज एट पॉइंट बी एट पॉइंट डी. नोडल एनालिसिस यूज करके पॉइंट डी में पोटेंशियल फाइंड आउट करो. चेक कर लो, यू गेट द सेम पोटेंशियल. ओके, होना बोलता एक बार नोडल एनालिसिस लिख के चेक कर लो. आकाश जैन. ओके, इफ यू डोंट हैव एनी नोडल एनालिसिस आइडिया, डोंट वरी. इन द फर्दर क्लास में नोडल एनालिसिस डिस्कस करूंगा. डिस्कशन होने के बाद चेक कर लो, आप डेरिवेशन कर सकते हैं. आप डेरिवेशन कुछ भी जरूरत नहीं है. दैट्स डायरेक्टली आई एम राइटिंग आंसर्स. ओके, आई एम गिविंग द हिंट्स. होना बोलता आप नोडल एनालिसिस चेक कर लो.
Okay, dear students, corresponding bridge, if you want to verify the potential is point B, point D, आप चेक करना बोले तो नोडल एनालिसिस से चेक कर लो जी, होना बोले तो आपको नोडल एनालिसिस आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, इन द फर्दर क्लास में डिस्कस नोडल एनालिसिस, बाद में चेक कर लो. चलिए, now this is one approach, this is one approach to conclude the answer. Now come to the other approach. अदर अप्रोच क्या है बोलते हो, इधर पोटेंशियल कैसा है जी, पोटेंशियल पॉइंट बी एंड पॉइंट डी बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल अकॉर्डिंग टू बैलेंस ब्रिज. अकॉर्डिंग टू बैलेंस ब्रिज क्या है जी, पोटेंशियल पॉइंट बी एंड पॉइंट डी बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल. जब बी एंड डी दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है जी, जीरो. बट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोलते इधर वोल्टेज इक्वल जीरो. Potential difference 0 बोलते voltage equal to 0. Voltage equal 0 is a property of the short circuit. The voltage equal 0 is a property of the short circuit. Voltage equal 0 is a property of the short circuit. देखो जी, same problem we can solve by using other approach. Case 2 क्या है बोलता हूँ, let us indicate the respective points. Respective points क्या है here, A, C, B and the D. Corresponds example 6 and 6. देखो जी, वन जॉइंट इज कनेक्टेड और एक जॉइंट इधर है. कितना जॉइंट्स है जी, टू जॉइंट्स बोलते देखिए इधर, हाउ द 6 and 6 बोथ आर कनेक्टेड पैरेलल. इधर भी देखिए, वन जॉइंट कनेक्टेड है, अदर जॉइंट कनेक्टेड है. इधर भी दोनों कैसे हैं, पैरेलल. ऑन अदर हैंड द सेम फिगर होना बोल तो ऐसा भी दिखा सकते हैं आप. देखिए बी एंड डी दोनों का पोटेंशियल सेम है ना. जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो बी एंड डी दोनों पॉइंट को जोड़ सकते ना, इधर. सोर्स वोल्टेज कितना है इधर, 12. Source voltage कितना इधर, 12. Then what do you call this one as A? What these points are the B and the D. फिर क्या है जी, C. ऐसा दिखा सकते हैं ना. B and D दोनों पॉइंट जोड़ दिया इधर. अब सिंप्लीफाई करेंगे. 6 and 6 दोनों कैसे है जी, पैरेलल ना. ये दोनों कैसे है, पैरेलल ना. For each parallel combination can you find out equivalent resistance? For each parallel combination can you find out the equivalent resistance? What the equivalent resistance कितना है इधर, 3 ohms. Equivalent resistance कितना है इधर, 3 ohms. Let us find out the respective source current. कितना है जी, वोल्टेज 12 by कितना है सोर्स करंट, 2 amperes. Okay. Somebody requesting this first slide. Okay, don't worry. कॉपी कर लो जी, डोंट वरी. इधर बिट्स के लिए डायरेक्टली आई रोड द पॉइंट्स. आप होना बोलते हो, बाद में आई एम गिविंग द हिंट्स, चेक कर लो आप. बी एंड डी दोनों का पोटेंशियल कैसे सेम होना बोले तो आप चेक कर लो. टेक दिस पॉइंट एज ए ग्राउंड,
देखिए VA का पोटेंशियल डायरेक्टली बोल सकते हैं नोडल एनालिसिस से. दिस B एंड D के लिए नोड इक्वेशन लिख सकते हैं ना, नोड इक्वेशन लिख के चेक कर लो. B एंड D का एग्जैक्टली सेम आंसर आते हैं आपको. प्रूफ के लिए मैं बोल रहा हूँ, मगर सब कुछ जरूरत नहीं है. हमेशा एक स्टेटमेंट याद रख लो, बैलेंस बिच बोले तो टू डायगोनल पॉइंट्स आर द प्रेजेंट. देखिए ए एंड सी इज वन डायगोनल पॉइंट. एक डायगोनल पॉइंट में सोर्स रहते. दिस अदर डायगोनल पॉइंट द करंट शुड बी इक्वल 0. वेरिफिकेशन वाला बोलते हो नोड एनालिसिस चेक कर लो. एंड वन मोर थिंग रिमेंबर एज ए, मान लो बी एंड डी, इन द बी एंड डी इफ यू कनेक्ट एनी सोर्स. अब जब बी एंड डी में सोर्स कनेक्ट किया तो ए टू सी द करंट विल बी इक्वल 0. ब्रिज में हमेशा दो डायगोनल पॉइंट्स, एक डायगोनल पॉइंट में सोर्स और एक डायगोनल पॉइंट में करंट इक्वल 0, ऐसे याद रख लो. ये एग्जांपल में कैसा है, ए टू सी आपको सोर्स है, फिर और एक डायगोनल पॉइंट के इधर बी एंड डी करंट शुड बी इक्वल टू 0. ओके. हाँ यस प्रशांत, आज ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना. इन बिटवीन आई इंक्लूड अवर वर्कबुक क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी. In the workbook, I will try to discuss all the typical questions. Don't worry. Okay. अब एक कॉपी कर लो जी. केस में भी चेक कर लो, आंसर सेम है डिफरेंट, चेक कर लो. केस में क्या किया, इधर बी एंड डी पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया. शॉर्ट सर्किट करने से भी आंसर अगेन सेम. I hope all of you downloaded that workbook, I think. Okay. Neha, when that product of opposite terms are same, if Z1, Z4 equal to Z2, Z3, if condition satisfies, then only potential will be same. और कोई भी रेशियोज ले लो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करना है. ओके नेहा. हाँ ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वन यू हाउ टू अंडरस्टैंड एज एक पॉइंट याद रख लो. कभी भी बी एंड डी एग्जाम्पल में क्या हुआ, बी एंड डी का दोनों का पोटेंशियल सेम है ना. जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व द टू अप्रोचेस. प्रॉब्लम कैन सॉल्व द टू अप्रोचेस. एक अप्रोच क्या है जी, ओपन सर्किट के सॉल्व कर सकते हैं. और एक अप्रोच क्या है जी, शॉर्ट सर्किट. और अप्रोच क्या है, शॉर्ट सर्किट. आप इधर शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं. whenever the potentials are same we can solve the problem either by using open circuit concept or by using short circuit concept. आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं. फाइनली आंसर इज सेम. फाइनली आंसर इज सेम. ओके. इन दिस एग्जाम्पल थोड़ा सेम पोटेंशियल एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन द सिंपल क्वेश्चन. इन एग्जाम व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आल्सो. फिर एक डाउट आते हैं आपको, फिर कौन सा मेथड लगाना है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट. आप कोई भी मेथड लगाओ, आंसर इज सेम. मगर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस, कुछ क्वेश्चंस में ओपन सर्किट है तो थोड़ा आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं. इन सम ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू गो फॉर शॉर्ट सर्किट यू कैन कंक्लूड आंसर इजीली. थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको आइडेंटिफाई होगा कौन सा मेथड लगाना है, ओपन सर्किट नहीं तो शॉर्ट सर्किट. मगर एक पॉइंट याद रख लो, कोई भी मेथड लगा सकते हैं. आपको इधर फ्लेक्सिबिलिटी है. कभी भी दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दैट मीन्स इक्वी पोटेंशियल. इधर बी एंड डी दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, इसको इक्वी पोटेंशियल बोल सकते हैं. कभी भी इक्वी पोटेंशियल सेटिस्फाई हो रहा बोले तो देयर आर टू अप्रोचेस टू कंक्लूड द आंसर्स. एक तो ओपन सर्किट और एक क्या है शॉर्ट सर्किट. आप कोई भी मेथड लगा लो, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके. चलिए और एक एग्जांपल चेक करेंगे. एक क्वेश्चन लिखो जी. फाइंड सोर्स करंट ऑफ द नेटवर्क शोन. Find source current of the network shown.
कुशी शर्मा ऑलरेडी गिव द हिंट्स ना. प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म शुड बी सेम. शर्मा जी आप नहीं लिख रहे हैं क्लास नोट्स. ऑलरेडी गिव हिंट्स. ब्रिड्ज के लिए 3 कंडीशन बता दिया मैं आपको. प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर द सेम, फर्स्ट कंडीशन. फिर क्या लिख रहे हैं जी आप नोट शर्मा जी. अब तक 2 बार रिपीट किया बैलेंस ब्रिज के बारे में, फिर पूछ रहे बैलेंस ब्रिज कैसे आइडेंटिफाई करना है. ऑब्जर्व है. इधर भी तो ए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी कैन गो फॉर सो मेनी मेथड्स. यू कैन गो फॉर सो मेनी मेथड्स. चलिए इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग आवर इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट. देखिए पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज ए. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज ए. लेट अस assume potential at this point is a B. Now C, F, other one is a K. देखो जी, मान लो here source current IS is coming. मान लो इधर IS current is coming. थोड़ा ध्यान से देखो जी, IS current is coming here. After reaching this point, देखो जी 2 ohms, some current go to 2 ohms, remaining current go to 2 ohms. आप यार ऐसा बोल सकते हैं ना, 2 ohms connected to 6, 8, 6 and 8 और एक रेजिस्टेंस क्या इधर 12. थोड़ा ध्यान से देखिए 2 कनेक्टेड टू 6, 8 एंड द 12. इधर भी देखिए 2 इज कनेक्टेड कैसे इधर 6 और एक क्या है 8 और एक क्या है इधर 12. नो 2 ohms कनेक्टेड कितना ब्रांचेस थी 3 ब्रांचेस. इधर भी कैसा है 2 ohms कनेक्टेड हाउ मेनी ब्रांचेस हियर आल्सो. देखो जी 2 is connected to again this 12, whatever other one 8, other one is a 6. आप ऐसा बोल सकते हैं ना, connections this side, connection this side, both are the exactly identical. आप होना बोल तो नीचे चेक कर सकते हैं. इधर ऐसा बोल सकते हैं ना 2 ohms connected to कैसा है जी 12 and 8 and the 6. कैसा है जी 2 ohms connected to 12, 8 and the 6. इधर भी कैसा है 2 ohms connected to this 6, 8 and the 12. देयर भी सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं ना. द कनेक्शंस दिस साइड बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. क्या बोल सकते हैं कनेक्शन दिस साइड एंड कनेक्शन दिस साइड बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. देन हियर मान लो इधर IS करंट इज कमिंग. इधर क्या हो रहा है जी IS करंट इज कमिंग. इफ IS करंट कमिंग ऐसे दिखा सकते हैं ना द टोटल करंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड IS/2. इधर भी क्या होता है जी IS/2. करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इधर IS/2 एंड दिस इज आल्सो IS/2. देखिए इधर IS/2 कमिंग करंट कमिंग. थोड़ा ध्यान से देखिए. शैल आई से दिस वोल्टेज अक्रॉस A एंड B, वोल्टेज अक्रॉस A एंड C बोथ आर द सेम. क्यों बोलते थे देखिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का करंट भी सेम है. अब क्या बोल सकते हैं इधर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है. जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है तो ऐसा बोल सकते हैं ना voltage across A and B, voltage across A and C both are exactly equal. इधर क्या बोल सकते हैं this VB and VC both are exactly equal. क्या बोल सकते हैं जी this VB and VC both are exactly equal. Then here for this particular example ऐसा बोल सकते हैं ना current of this branch is equal to 0. पोटेंशियल एट पॉइंट B, पॉइंट C बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल. करंट कितना हुआ जी 0. करंट कितना है 0. नो कम टू दिस वन. ये भी सेम लॉजिक. देखिए बाहर करंट कितना निकलते जी इधर IS करंट निकलते. बाहर करंट कितना निकलते जी IS करंट निकलते. इधर IS करंट निकलने के लिए कितना ब्रांचेस कंट्रीब्यूट करे जी 2 ब्रांचेस. कितना ब्रांच कंट्रीब्यूट करे इधर 2 ब्रांचेस. देन व्हाट इज करंट ऑफ ईच ब्रांच. करंट ऑफ ईच ब्रांच कितना इधर I/2. ये भी करंट कितना है जी I/2. बाहर करंट कितना है इधर IS करंट आ रहा है. हाँ इधर भी सेम लॉजिक ऐसा बोल सकते हैं ना द पोटेंशियल बिटवीन द K and D, पोटेंशियल K and F बोथ आर एग्जैक्टली सेम. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K and D, K and F बोथ आर एग्जैक्टली सेम. दैट मीन्स वी कैन से दिस में ऐसा बोल सकते हैं ना D and F दोनों का पोटेंशियल सेम है. जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो व्हाट इज द करंट ऑफ दिस ब्रांच इक्वल टू 0. द करंट ऑफ दिस ब्रांच इक्वल टू 0. इधर भी 2 मेथड्स लगा सकते हैं. अभी पिछले बार आपने डिस्कस किया था
जब सेम पोटेंशियल है तो आप ओपन सर्किट कर सकते हैं, ना तो शॉर्ट सर्किट. यू कैन गो फॉर एनी अप्रोच, कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप. देखो जी इधर भी कैसा हो रहा है, इधर बी एंड सी दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, पोटेंशियल सेम है तो एक अप्रोच क्या है, शॉर्ट सर्किट. दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना. और एक अप्रोच क्या है, करंट जीरो. करंट जीरो क्या बोल सकते हैं इधर, ओपन सर्किट. आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं. इधर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट. बाद में आप क्या करो, क्लास होने के बाद ओपन सर्किट भी चेक कर लो, यू गेट द सेम आंसर. ओके, ओपन सर्किट आप चेक कर लो, आई एम सॉल्विंग बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट. आप ऐसा मत सोचो कि हमेशा शॉर्ट सर्किट ही जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, कौन सा मेथड से आसानी से आ सकते. धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको आदत बन जाएगा. दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ आई कंक्लूडेड, अपना सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, सेम प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स. आप होना बोल तो केवीएल लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, मेश एनालिसिस लगा सकते हैं, आप कोई भी थ्योरम भी लगा सकते हैं. सो मेनी अप्रोच आर देयर. मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका टारगेट क्या है, कम समय में एक्यूरेट आंसर होना है. फिर कैसे पता चलता है कौन सा मेथड लगाना है, दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिस by solving the more number of questions. Gradually what will happen, your brain will develop its own thinking power. It will frame its own ideas. Obviously the brain will select the optimistic method. आप जितना प्रैक्टिस करें तो उतना बढ़िया आउटपुट आएगा. बट डोंट थिंक एज एक रिविजन होने के बाद तुरंत मुझे 100% आउटपुट आना है, ऐसा मत सोचिए. आप ऐसा सोच रहा बोले तो यू आर नॉट थिंकिंग करेक्ट डायरेक्शन. ओके, इन द फर्स्ट रिविजन में कुछ कंफ्यूजन आते हैं, आउटपुट भी बहुत कम आते हैं. इट मे बी इन द फर्स्ट रिविजन यू मे अंडरस्टैंड 40 to 50% ऑल्सो, और समटाइम्स इट मे बी 60%. इधर एक स्टेटमेंट आज रख लो, इन द फर्स्ट रिविजन आउटपुट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. मान लो ये सब्जेक्ट आपका कॉलेज में बहुत क्लियरली हो गया है, क्लियरली यू रेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, देन यू मे गेट अ गुड आउटपुट इन द फर्स्ट रिविजन itself. You can get a 60% or 70%, you may get 90% also. मगर आप कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़े, आपसे स्टार्ट हो रहा है जीरो लेवल से, नो प्रॉब्लम. जीरो से स्टार्ट होने से फर्स्ट रिविजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं आपको, फर्स्ट रिविजन ज़्यादा मिस्टेक्स भी होता है, मगर धीरे धीरे रिविजन्स करने से ग्रेजुअली योर टाइम कंजम्पशन डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग, डोंट बी वेरी हरी इन द फर्स्ट रिविजन. फर्स्ट रिविजन में ज़्यादा मिस्टेक्स करना है, करने से ही आप अच्छा सीख सकते हैं. आप गलतियां कुछ भी नहीं करें तो आपको कुछ भी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा. ओके, इन द फर्स्ट रिविजन यू मे गेट सो मेनी मिस्टेक्स, इट टेक लिटिल मोर टाइम ऑल्सो, डोंट वरी. धीरे धीरे नंबर ऑफ रिविजन्स इंक्रीज करने से आपका पूरा वीक पॉइंट्स विल बी रिड्यूस. ओके, चलिए इधर क्या है जी, पोटेंशियल्स. पोटेंशियल कैसा है, दोनों का सेम. जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो बी एंड डी का एक अप्रोच क्या है जी, ओपन सर्किट, और एक अप्रोच क्या है, शॉर्ट सर्किट. यार मैं क्या करूँ, इधर शॉर्ट सर्किट प्रीफर कर रहा हूँ. तो मैं शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. बाद में होना बोलते आप चेक कर लो, बाद में होना बोलते यू कैन वेरीफाई द आंसर बाय यूजिंग ओपन सर्किट. इधर देखो जी, okay, now let us simplify further. I indicated this point as a short circuit. I indicated this point as a short circuit. अब सिंप्लीफाई करेंगे. अब थोड़ी देर ध्यान से देखो जी, कम टू द 2 and 2. 2 and 2 देखो जी, 2 and 2, वन जॉइंट इज कनेक्टेड, अदर एक जॉइंट इधर कनेक्ट हुआ.
देखिए इधर वन जॉइंट इज कनेक्टेड, वन मोर जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर. कितना जॉइंट्स है जी? दो जॉइंट्स. दो जॉइंट्स है तो 2 and 2 बोथ आर द पैरेलल. पैरेलल बोलते इक्वल डिस्टेंस कितना है इधर? 1. इक्वल डिस्टेंस कितना है जी? 1. इधर भी देखिए 12 and 8, वन जॉइंट इज कनेक्टेड, वन जॉइंट कनेक्टेड, वन मोर जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर. कितना जॉइंट्स है जी? दो जॉइंट्स. 12 ohms and the 8 ohms. ये भी देखिए अगेन फॉर दिस 8 and 12 चेक करो जी. एक बाय वन जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर, वन जॉइंट कनेक्टेड हेयर, वन मोर जॉइंट इज कनेक्टेड हेयर, वन मोर जॉइंट कनेक्टेड हेयर. 8 ohms. और ये क्या है जी? 12 and 12 देखिए जी, वन जॉइंट कनेक्टेड हेयर, अदर जॉइंट कनेक्टेड हेयर, वन मोर जॉइंट कनेक्टेड हेयर, वन मोर जॉइंट कनेक्टेड. तो इधर भी क्या है जी? 12. अब देखो जी इधर नो 2 and 2, इधर भी देखिए 2 and 2, वन जॉइंट कनेक्टेड हेयर, अदर जॉइंट कनेक्टेड हेयर. रेजिस्टेंस कितना है इधर? 1. नो वोल्टेज कितना है इधर? 88. वोल्टेज कितना है इधर? 88. ओके. हाँ अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आप. देखिए इन दिस एग्जांपल हाउ दिस फोर ब्रांच कैसे है जी? पैरेलल ना. देखिए चारों ब्रांच कैसे है? पैरेलल ना. कैन यू सिंप्लीफाई फर्दर? चेक करो जी, डू द फर्दर कैलकुलेशंस. आप करो, ट्राई करो, डू इट, डू द फर्दर कैलकुलेशंस. खुशी गौरव जी, कौन है नो? कुशाल गौरव. ओपन से करो, आप ट्राई करो. नहीं आ रहा बोल तो बाद में मुझे टेलीग्राम में स्नैप भेजो, आई विल सेंड द स्टेप्स. आप ट्राई करना है, कर नहीं कर, ट्राई नहीं करे तो कुछ भी नहीं आएगा आपको. आप ओपन से ट्राई करो. नहीं आ रहा बोल तो मुझे बाद में टेलीग्राम में भेजो, आई विल सेंड द सोल्यूशन. होना बोले तो थिंक करना है. थिंक करने से धीरे धीरे आपको आइडियाज फ्रेम होगा. तुरंत आउटपुट एक्सपेक्ट मत करो. आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा बोल तो यू आर गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन. ये चारों ब्रांचेस का इक्वल डिस्टेंस कितना है जी? इधर भी चारों ब्रांच कैसे है इधर? पैरेलल. पैरेलल बोलते क्या कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस कितना है इधर? 2.4. ओके, वेरी गुड. देन व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? टोटल इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं इधर? 1 प्लस 2.4 प्लस 1. आप इधर जोड़ दिया तो कितना होता है इधर? 4.4 ohms. Can you find out the respective source current? The source वोल्टेज कितना है जी? 88 by 4.4. आप इधर सिंप्लीफाई करने से करंट कितना होता है जी? 20 एम्पियर्स. किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस ब्रिज का हाँ, if not satisfied balance bridge, then we have to go for the further steps में आते हैं आपको. अनबैलेंस ब्रिज के लिए we go for the स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. ओ सम स्टूडेंट गेटिंग 12.5. कैसा आ रहे जी? 12.5 कैसा आ रहे आपको? चेक करो जी एक बार, और एक बार चेक करो.
Okay. Oh, somebody solved by using both methods. Very good, very good, very good. See, dear students, same problem we can solve by using so many methods. Now, this is one of the approach. Okay. Okay. और एक मेथड और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Okay. Write the question. Find source current. Find source current of the network shown. Find source current of the network shown. अविराल दोनों तरफ कनेक्शंस आइडेंटिकल है जी, सिमेट्रिकल कनेक्शंस आइडेंटिकल है. दैट्स व्हाई करंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. कौन है नो? मीलू. मिरर इमेज बाद में आते जी. इन द फर्दर स्टेप्स आई टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दैट वन, डोंट वरी. अब इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, थोड़ी देर रुकिए आप. सब कुछ एक बार एक्सपेक्ट मत करिए. मिरर इमेज प्रॉब्लम भी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स में आते हो, डोंट वरी. Kushi Sharma, I am trying to explain the sequence. See, don't worry, I am not following any previous paper question sequence. नहीं है. जो अपना क्लास नोट्स है इसमें सब कुछ कवर होगा, आप टेंशन मत लो. प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो जी, तो सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी. अगर सीक्वेंस में भी डिफरेंट, डोंट वरी. इन दिस एग्जांपल देखो जी, इधर 2 3 बैलेंसर एंड बैलेंस. देखो जी 2 3 इधर भी बैलेंस. जब बैलेंस हुआ तो इन द बैलेंसर विच potential at point A, potential at point B, both are exactly equal. Potential point A and point B both are exactly equal. What is the current of this branch equal to 0? करंट कितना है जी? 0. ये भी देखिए 3 6, इधर भी 3 6 3 6 3 6. बैलेंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई. देन व्हाट इज द करंट ऑफ दिस ब्रांच इक्वल टू 0? करंट ऑफ दिस ब्रांच इक्वल टू 0. बोलिए कैसे बोल सकते हैं? जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दो तरीका है. एक क्या है जी, ओपन सर्किट, और एक क्या है, शॉर्ट सर्किट. हाँ, इधर मैं ओपन सर्किट से कर रहा हूँ, बाद में आप शॉर्ट सर्किट भी चेक कर सकते हैं. बाद में आप शॉर्ट सर्किट चेक कर लो. आई एम डूइंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग ओपन सर्किट. हाँ, इधर देखो जी, फॉर दिस एग्जांपल के एंड बी दोनों का पोटेंशियल सेम है. हियर आई एम गोइंग फॉर ओपन सर्किट. कैन यू ओपन सर्किट दिस प्रॉब्लम? Now again the 2 and 2 both are connected to the source current. In this example, how the 6 and 6 both are connected? Series. 3 and 3 both are in series. 2 and 2 both are connected in the series. How the branch 1, branch 2, branch 3, how the all the branches are connected? Parallel. All the branches are connected parallel. Simplify करने से can you find out equal distance?
सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से कैन यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस वन, कैन यू फाइंड आउट द सोर्स करंट इक्वल VS by R इक्विवेलेंट. चेक करो जी.